We are approaching almost at the end of this module. We have talked about different skills at micro level, and then gradually, step by step, we moved towards the macro level of skills, जिसमें कि हमने बात की listening की, speaking की, reading and writing. एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि when we talk about listening skill or we talk about reading skill, ये दोनों receptive skills हैं. And when we talk about speaking or we talk about writing, ये production side पे आ जाते हैं. किस तरह से वो receptive हैं? Because when you are listening, there is nothing that is going from your side. You are simply receiving the information, you are simply receiving the code, और आपका mind सिर्फ उसको decode कर रहा है, आप encode नहीं कर रहे. जिन skills में आप encoding end पे नहीं खड़े होते हैं, आप सिर्फ receive कर रहे होते हैं, वो receptive होते हैं. और जिन पे आप produce भी कर रहे होते हैं, encoding side पे भी खड़े होते हैं, उन पे को हम production किस्म के skills कहते हैं. ठीक है जी. तो we are talking about the final one, that is the writing. writing के ऊपर कुछ बात हम कर चुके हैं, and writing process पे मैं बात करने जा रही हूँ, because when you have to write something, so it's a big issue of how to start, where to start, or sometimes writer's block की भी बात मैंने की थी कि एक block सा you feel there is something is hindering me and I can't move on and I want to write something, लेकिन क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहाँ छोड़ा था, कहाँ से शुरू करूं. This is known as writer block. ये भी एक बड़ा issue होता है. तो हम कैसे writing process की किसके करेंगे, क्योंकि writing process जो है ये शुरू होता है it starts at the point where you try to find some idea. ये देखिए, ये स्लाइड पे आपको 3 आ रही हैं पिक्चर्स नज़र. देखें, पहली पिक्चर में they are trying to find some idea, और ये जो in between है पिक्चर, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है. That's why I always like to share it with my students also. अब ये देखें, बिल्कुल he is trying to write something और वो बिल्कुल डूबे हुए हैं वो साहब, और इस गिर्द उनके यानी डेप्थ में, वो ओशन की जो डेप्थ है उसको भी एंजॉय कर रहे हैं. और ऊपर देखें, समथिंग इज ग्रोइंग एंड समबडी इज रेस्टिंग, टेकिंग द रेस्ट, एंड यानी कोई तीनों दुनियाएं हैं जिसको वो कोई उसमें डूबे हुए हैं. ये मुझे बड़ा एंजॉय करती हूँ इसको मैं. और बिल्कुल यही पोजीशन होती है व्हेन यू राइट समथिंग, योर माइंड इज मूविंग in different directions and trying to get the ideas, trying to collect the ideas. And when you collect the ideas, you make your first drafts, and then you finish it and you refine it and you come to the final draft. ये सारी stages होती हैं, सारे processes होते हैं. You can look at this one. This is another model for writing process. It is starting from brainstorming, ठीक है? And then it is coming to draft. और फिर you revise it, you review it, you polish it, and then you publish. And at the point of publishing, you can write down कि आप उसको लिख भी रहे हैं. publishing को आप वो भी कह सकते हैं ना कि जी हम लिख रहे हैं. ठीक है, ये देखें, brainstorming से ही स्टार्ट हुआ. वो जो साहब अभी दिखाए थे जो बिल्कुल डूबे हुए हैं, वो यहाँ पे थे, और फिर आपके पास ये फर्स्ट ड्राफ्ट आ गया. फिर रिवाइजिंग का है. अच्छा, ये देखें, कुछ जगह के ऊपर आप देखें, इधर से उधर से एरो इधर को भी आ रहा है, इधर को भी आ रहा है. तो ये आपको क्या चीज़ वो दिखा रहा है कि यू कैन मूव फ्रॉम दिस प्रोसेस इज कनेक्टेड टू दिस स्टेप ऑल्सो, दिस स्टेप इज कनेक्टेड ओवर हेयर ऑल्सो. तो एक जो समझने की बात है वो ये है कि यू गेट द आइडिया, you make the draft, you revise it, you review it, you polish it, and by doing all of that, you move to the next step and next step and next step. ठीक है, ये देखें, this is almost the same model. जब मैं आपको ये models दिखाती हूँ ना, different slides दिखाती हूँ, तो मेरा ये aim होता है कि you can use this one. अगर आपको ये नहीं लग रहा तो यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन. इसको देख लें, इसको देख लें. आप इसमें से किसी को भी अप्लाई करके ना यू कैन मूव टुवर्ड्स द राइटिंग प्रोसेस, और ये सारे को आप अपना बेहतर कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, इसमें भी आप देखें ये वही चीज़ है, और ये ज़्यादा डिटेल के साथ इस दफ़ा जो है वो उन्होंने दे दी है.
پہلے پچھلی والے میں تو ہم نے صرف وہ اسٹیپس پڑھے ہیں نا, تو اس میں دیکھیں یہ زیادہ ڈیٹیلز آ گئی ہیں ہمارے پاس. اف یو لک ایٹ دس سلائڈ, تو ساری والے جو آپ کے وہ اسٹیپس ہیں وہ یہاں بھی نظر آ رہے ہیں, بٹ دیر از اے ڈفرنس آلسو دیٹ ایچ اسٹیپ ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو سب اسٹیپس. تو آپ دیکھیں کہ جیسے پری رائٹنگ ہے, تو دین what do you do in pre-writing? You select the purpose why you're writing and your audience. That is also very essential. Then audience means کہ آپ کا ریڈر کون ہوگا. Your students, کوئی بچہ ہے, کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ یو آر رائٹنگ فار دیٹ پبلک شوڈ ریڈ یور آرٹیکلس, کیا آپ کی آڈینس ہے. دین برین اسٹارمنگ, اگین برین اسٹارمنگ کے ساتھ تو یہ جو پکچر ابھی پیچھے ہم نے کہیں دیکھی تھی نا, جس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا اسی میں کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس کو آپ نے اس کو کنیکٹ کر لیجئے برین اسٹارمنگ کے لفظ کے ساتھ. جب بھی یہ ٹرم آئے تو اس پکچر پہ چلے جائے. The image itself is going to explain what do we mean by brainstorming. پھر فارم آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں. Are you going to for some article? Are you going for some poem? What is the form of your writing? So یہ ساری steps you can see, revision, writing, یہ ساروں میں آپ کو you can see the sub steps also. آپ ہر اس کو پڑھ کے آپ اس کو we will be able to understand if this is the step, what does it mean, what can I do when I am standing at this step, what are the sub steps over here. اور ایک اور بات میں آپ کی ٹینشن چاہوں گی اس کے اوپر کہ دیکھیں یہ ایروز جو ہے نا, یہ دو ڈائریکشنز میں موو کر رہے ہیں. یہ دونوں ادھر بھی کنیکٹڈ ہے, ادھر بھی کنیکٹڈ ہے. اٹ مینس ایٹ ایچ اسٹیپ یو کین موو انٹو بوتھ ڈائریکشنز. یو کین گو اوور ہیئر, یو کین گو اوور دیئر آلسو. یہ چیز ایک آپ اس میں دیکھنا, اور اس کو فالو, آپ کو وہ والا اچھا لگتا ہے اس کو فالو کر کے لکھ لیں, آپ کو یہ اچھا لگتا ہے آپ اس کو فالو کرا کے لکھا لیں. یہ دیکھیے دس از اندر ماڈل, اس میں اسٹیپ وائز ہے اینڈ 10 اسٹیپس آر دیئر اینڈ ایچ اسٹیپ ہیز بین ڈیفائنڈ. ٹھیک ہے, پلان اٹ, رائٹ اٹ, چیک اٹ, دیز آر 3 مین فیزز اور مین اسٹیپس, اور ہر ایک کے آگے پھر 3-4 اسٹیپس ہیں. اس کو فالو کرا کے لکھا لیں. جیسے پلانٹ میں اگین انڈرسٹینڈ دا ٹاپک, برین اسٹارمنگ آئیڈیاز, دین یو سی آرگنائزنگ, اور رائٹنگ میں کیا کیا ہے, انٹروڈکشن ہے, کیا کیا ہے, باڈی ہے, باڈی پیراگرافس ہیں. سو یو کین موو لائک دس آلسو. ان سارے والوں کو فالو کرتے ہوئے یو کین put your students into writing activity and it becomes quite easy. اگر ہم صرف ان کو یہ کہیں کہ لکھ دو تو it's quite difficult, کیونکہ جب ہم لکھنے کی بات کرتے ہیں نا, writer block is always there that hinders you and your students. تو اس کو آپ ان steps پہ لے جائیے تو ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا.